Subscribe to Spoken English Master to get more videos like this. Hello, my name is Kailas and you are watching Spoken English Master. Today we are going to talk about a very important topic, that is can. This is part 1 and we will definitely come with part 2. Today we will be learning how to use can in our day-to-day life, how to apply it properly. So without wasting time, let's get started. First of all, we have to understand what is can and how to use it properly. Can means, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कैन का हिंदी मीनिंग सकना, मैं वहां पे जा सकता हूं. आई कैन गो देयर, मैं ये काम कर सकता हूं. आई कैन डू दिस वर्क, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. कैन मीन्स व्हाट? कैन शोज प्रेजेंट एबिलिटी. लेट्स सी स्टूडेंट्स, can means what? It shows here, it shows present ability. Ability means like what we can do, our ability. Okay, like if I say I can teach you, it's my ability to teach you properly. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. Okay, means मेरे पास ability है सिखाने का. Okay, so I can teach you or I can make you learn. You can say, sir, I can drive a car, I can ride bike. These all are your abilities. Means तुम बाइक चला सकते हो. Okay, you can ride a bike, you can drive a car. This is ability. So what is the formula? First of all, you have to understand formula is subject. Very easy formula. Subject plus can plus V1 plus object. You know, subject plus can. Can is your modal. Can means what? Modal auxiliary. Okay, so I have created few examples for you. Let's read one by one. Okay, number 1, Ram can speak English. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल सकता है. तो राम के पास ये इंग्लिश बोलने का जो एबिलिटी है वो है. ठीक है, राम इंग्लिश बोल सकता है. राम कैन स्पीक इंग्लिश. देखिए यहाँ पे राम इज योर सब्जेक्ट, उसके बाद कैन यहाँ पे है. उसके बाद देखिए ये जो है ये V1. वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर modals we always use V1. Okay, this thing you have to keep in your mind properly. Okay, after modals it can be can, it can be could. Okay, may, might, must, whatever. After modals we always use V1. Let's see next one. He can swim well. वो अच्छा तैर सकता है. अच्छा, next, I can drive car. मैं कार चला सकता हूँ. Okay, means I have the ability to drive the car. Here also can plus V1. Okay, here can plus V1. Last one, my friend can teach English. Here also V1. My friend can teach English. मेरा दोस्त इंग्लिश पढ़ा सकता है. Okay, like इंग्लिश पढ़ाने का जो एबिलिटी है वो उसके पास है. He can teach you English. Okay, so he can teach English. So here also again I am reading. Ram can speak English. राम इंग्लिश बोल सकता है. He can swim well. वो अच्छे से तैर सकता है. Okay, like I can drive car. मैं कार चला सकता हूँ. Okay, my friend can teach English. मेरा दोस्त इंग्लिश सिखा सकता है और पढ़ा सकता है. ठीक है. Now as I have told you, each and every sentence can be divided into 4 parts. Okay, this is your affirmative part. Okay, affirmative means positive sentence where we don't find any not. Okay, now this sentence we will try to convert this sentence into negative interrogative as well as negative interrogative. Okay, as I have told you 4 parts are there. So let's see. देखिए दोस्तों, राम कैन स्पीक इंग्लिश. राम इंग्लिश बोल सकता है. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस. राम कांट स्पीक इंग्लिश. कांट मीन्स कैन नॉट. ओके, दिस शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन. राम कांट स्पीक इंग्लिश. राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है. ओके, कैन राम स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क. क्या राम इंग्लिश बोल सकता है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन. नेक्स्ट, कांट राम स्पीक इंग्लिश? क्या राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है? दिस ऑल्सो क्वेश्चन बट नेगेटिव क्वेश्चन. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग. राम कैन स्पीक इंग्लिश. राम इंग्लिश बोल सकता है. राम कांट स्पीक इंग्लिश. राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है. ओके, कैन राम स्पीक इंग्लिश? क्या राम इंग्लिश बोल सकता है? कांट राम स्पीक इंग्लिश? क्या राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है? ओके, अगेन आई एम टेलिंग वन, लाइक आई कैन स्टे हियर. मैं यहाँ पे रह सकता हूँ. मे बी some problems are there, no one can stay here but I can stay here.
I can stay here, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ. I can't stay here, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ. Can I stay here? क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? Can't I stay here? क्या मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ? Okay, so in this way you can make 4 types of sentences. Okay, can is very important, and not only this one, we have some other uses also in case of can. Okay, this is part 1, and we will definitely come up with part 2 very soon. Okay, I think it's clear to you friends. That's all for today. If you like this video, please share this video with your friends so that each and every student can take the advantage from these videos. Okay, and subscribe to our channel to get more videos like that. Thank you. Thanks for watching.